नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोज खंडेलवाल आर्थराइटिक रिवर्सल प्रोग्राम। और इसमें मैं आज आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो होलोग्राफिक एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से संबंधित है। इस वक्त जो ट्रेंड में है और पूरी दुनिया में जो शोधपरक चीजें हैं, मैं उस पे आ रहा हूँ कि कान के और जिसको हम ईयर एक्यूप्रेशर कहते हैं या ऑरिकुलर कहते हैं, जो ज्यादा करके अलग-अलग शाखाएं के रूप में पूरी दुनिया में लगभग 20 प्रकार के कान के ऊपर में थ्योरियां हैं और टेक्निक्स है, लगभग 20 प्रकार के। कुछ प्राचीन प्रकार के हैं, कुछ टीसीएम वाले हैं, कुछ मेरिडियन वाले हैं, कुछ होलोग्राफिक है और कुछ है जो ट्राइड, टेस्टेड एंड रिसर्च ओरिएंटेड है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दुनिया का टॉप लेवल का सबसे हाईएस्ट वो ऑरिकुलर है जो 99.99% वही लोग करते हैं जो एलोपैथी बैकग्राउंड के हैं। यानी इसको करने के लिए योग्यता या तो मेडिकल बैकग्राउंड होना होगा या मेडिकल में पैरामेडिकल होना होगा, नर्सिंग स्टाफ होना होगा आपको, या टीसीएम के 4.5 साल कोर्स किए हुए व्यक्ति जो लाइसेंस्ड एक्यूपंक्चरिस्ट है, उन्हीं को ये सिखाया जाता है। तो अब आप इसी से समझ जाइए कि जिसका 99.99% एलोपैथी फिजिशियन जिस फील्ड में, पेन मैनेजमेंट में हो, और यह अमेरिका के सारे विंग आर्मी के, जैसे नेवी है उसमें भी इसकी शाखा है, जो जमीनी सेना है उसमें भी शाखा है, एयर फोर्स है उसमें भी शाखा है, और तीनों की तीनों शाखाएं जो अलग अलग रिसर्च कर रही है, सबके अच्छे रिजल्ट आए हैं और पूरी दुनिया में अब इसके काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं और इसके रिजल्ट प्रूवन है। प्रूवन का मतलब है कि बहुत तरह के स्टडीज में, जो मॉडर्न एलोपैथी के स्टडीज है उसमें यह समझ में आया है कि यह काम करता है। तो आज आपका जो मुख्य है वो फाउंडेशन मजबूत करना है, दायरा मजबूत करना है, आपकी सोच मजबूत करनी है, क्योंकि ज्यादा करके एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वालों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और कमी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, वो पॉइंट के चक्कर में रहते हैं कि कौन सा पॉइंट लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, खाम खा के किताब में और बाकी चीजों में अपना समय आपको खराब नहीं करना है। आपको सिर्फ 5 पॉइंट का इस्तेमाल करना है। आर्थराइटिक 140 प्रकार के हैं, जिसमें ज्यादा करके आपके पास घुटना दर्द के, कमर दर्द में भी कम से कम 20-25 प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, नी में भी 20-25 प्रकार के होते हैं, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर, तो ज्यादा करके इस टाइप के रोगी आते हैं और सब पर यह काम करता है। और इस सबसे अच्छी बात है, इंस्टेंट रिजल्ट देखना है, यानी आपको जो रिजल्ट देखना है वो उसी दिन उसी समय देखना है। फीडबैक जो होता है रोगी, वो उस समय ही देता है। तो हमें आपको फीडबैक कैसे लेना है, कैसे पूछना है, कैसे काम करना है, उसके बारे में 4 क्लासेस करूंगा, जिसमें पहला क्लास आज कर रहा हूँ और बाकी 3 क्लास आगे भी होगी। 3 के बाद भी अगर मुझे जरूरत पड़ी करने की तो करूंगा, क्योंकि परफेक्ट ट्रेनिंग मकसद है, ना कि दिन गिनना और आवर्स गिनना। तो आज मैं आपको क्या कर रहा हूं, उस विजन में लेके चल रहा हूं कि आप भारत में बैठकर उस चीज की कल्पना कीजिए कि क्या चीज है ये बैटलफील्ड है क्या, ये बैटलफील्ड कर कौन से लोग रहे हैं, क्यों इस वक्त ये मोस्ट पॉपुलर है, क्यों इसमें सिर्फ एलोपैथी वालों की फौज इकट्ठी है, क्यों वो लोग ज्यादा करके नन एलोपैथिक को या नन मेडिको को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और आगे चलकर मैं आपको सिखाऊंगा मॉडिफाइड। यहाँ एक वर्ड मैंने मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड मतलब यह है कि लीगली सेफ प्रैक्टिस के लिए उसमें सिर्फ उसकी जो निडल है वह इस्तेमाल हम लोग फिलहाल आप लोगों को करने की सलाह नहीं देंगे, तब तक जब तक आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे ऑफलाइन में नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर ईयर पे आपने कोई डैमेज कर दिया तो नॉन रिपेयरेबल होगा, वो फिर हीलिंग नहीं होता है कान का, और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको क्या करेंगे, वो चीज देना है जिसमें 0% रिस्क हो। तो आपको मैं वकारिया सीड से, जो आपको ईयर स्टिमुलेटर बताया उससे, एक्यूप्रेशर के तरीके से, और प्रेस निडल से ये सारी चीज सिखाऊंगा। प्रेस निडल मैं इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए आपको भी सलाह दूंगा कि प्रेस निडल का भी इस्तेमाल ना करें। वकारिया सीड्स कुछ अच्छे प्रकार के अवेलेबल है जिसमें पैलेट्स का इस्तेमाल होता है, तो पैलेट्स के भी तरीके हम आपको बता देंगे। तो आपको 3-4 वो तरीके बताएंगे, सिर्फ एक तरीके नहीं, जिससे रिजल्ट इक्विवेलेंट दिया जाए। देखिए, मकसद ये नहीं है कॉपी करना, मकसद है रिजल्ट देना। जब रिजल्ट आपको बराबर मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो निडल आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो निडल के लिए आपको एलोपैथी डॉक्टर होना जरूरी है। तो वो चीजें हटाकर मैं बाकी चीजें सिखा रहा हूँ जिससे रिजल्ट इक्विवेलेंट हो जाएंगे आपके, बराबर।
तो अब हम चलेंगे आपकी यात्रा कराने के लिए कि सबसे पहले फील कीजिए। तो फील करने के लिए मैंने कुछ वीडियो इकट्ठे किए हैं, वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। आज ज़्यादा करके मैं क्लास में वीडियो ही वीडियो दिखाऊँगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्लाइड दिखाऊँगा, क्योंकि पिछले बैच को मैं 175 स्लाइड्स दिखाकर पूरी कंसेप्ट उनका क्लियर कर चुका हूँ। तो आज देखेंगे तो उनको भी नया लगेगा और आपको भी नया लगेगा, और प्लस वो सारी चीज़ें आपकी वापस मेमोरी में आ जाएगी जो आपने देखा है। और जब हम मेन क्लास करेंगे तो आप सब के सब लोग एक ही लेवल के हो जाएँगे, फिर कोई आगे और कोई पीछे नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं, ये लगातार रहेगा रिकॉर्डिंग, तो ये मैं आपको वीडियो के मार्फत ही सारा कुछ दिखाऊँगा। पहले जानते हैं इसके थोड़े से, इसको देखिए आप ध्यान से। आवाज़ आ रही है? रेखा जी और सारे लोग अपने माइक को बंद रखेंगे। Because they go outside the wire, teaching them a lot of great questions. Right before the break, somebody said, "Hey, Doc, sometimes somebody gets shot, they're starting to bleed out. Well, I've lost that guy, but now somebody has to go put a ये tourniquet युद्ध के on him. मैदान में एक घायल व्यक्ति है जिसको एयरलिफ्ट किया जा रहा है So badly और that इनको somebody has to give that guy वो narcotics, ले and then you got जाएँगे, to वो watch him, make sure बेटरफील्ड he's breathing. एक्यूपंक्चर के लिए And they ले put जाया two जा रहा on है। the senior enlisted guy there, of course. After about a minute, he's like, "I can barely move my hands. This is killing me." And so I grabbed two and I said, "Okay, you've learned this. Come up here right now and do it right in front of us." So we put the tourniquets on. True story. We then had, you put this one in, you put the next needle in. How do you feel? That's different. Wow. And he's starting to move his hands. Said, "Okay, next needle, about 10 seconds apart." Oh my God. Oh, he starts laughing and says, उसका हाथ जख्मी था, जो बड़ी मुश्किल से घूमता था, एक ही नीडल में उसके हाथ so में आ गए unfortunately, that और particular सिर्फ group एक ही we पॉइंट taught, से। it was supposed to be 25, it was only 23 because two of them had been killed in the previous week in a firefight. So it was really, it's truly somebody that's, you know, outside the wire and doing the mission, and they really need this kind of training that they can take out there. What we call acupuncture dates back 3,000-4,000 years to traditional Chinese medical practice. So with acupuncture, we know that we may dial in for using the ear as one of several sort of mini systems or microsystems, ear or scalp or hands, and we know that we can not only affect local, but we can affect their general sense of well-being. So acupuncture allows us to do more than just treat, put a band-aid on it, or give them a pill. It allows us to reach into ये the एक entire स्पेशल person. नीडल होता है जो लगाया जाता है। Money इसके was बदले में dedicated आपको to ये teaching एएसपी नीडल battlefield कहलाता है। acupuncture, ये मैं आपको propagated प्रैक्टिकल throughout क्लास में the ये नीडल Department के of साथ Defense सिखाऊंगा और healthcare बाकी providers क्लास में and the इसके VA. बिना आपको And सिखाऊंगा। so we taught nearly 3,000 healthcare givers across the DoD and VA and close to 160 instructors on how to do battlefield acupuncture and how to teach battlefield acupuncture. This is a strip of 8 of them. Clearly you can carry enough treatments for 5, 10, 15 people just in your pockets or in your BDUs or ACU pockets. Easy to pop out, and when you do, you just pop them out like that, and that's the applicator for one needle. Tech Sergeant Jesse Sosa, part of the 89th Maintenance Group. I'm a flying crew chief on the C-32 and the C-40. Flying Vice President, First Lady, and a diplomat that needs to go overseas. When we carry high-profile DVs as Vice President, he brings a lot of pelican cases, which was one of the issues that strained my back. So the first time I got battlefield acupuncture, it was different. I wasn't expecting a lot out of it because I've tried everything, but I was open-minded. When the doc started to put needles in my ears, it was definitely a tingling sensation, but after a couple of days, I felt like I was a new man. These are very simple to use, so if I have somebody that has migraine headaches or recurring headaches, if they're active duty and they have headaches and they have to pull guard duty, and I'm at a bare bones base and I've only got 3 people that share the guard duty, and suddenly Sam has got a bad headache today and this guy just got off and he's supposed to work tomorrow, oh, I'm strapped. If I give this guy narcotics, he can't use his gun, he can't use his weapon. But if the doc can put ear needles in him and he feels like, oh, I feel great, I can go to work, I'm not drowsy, then that's a huge force multiplier. अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं।
कॉपी कलम लेके बैठिए, बीच-बीच में अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं नोट करूँगा। It is in the military that Colonel Richard Nimitzow, ये इसके retired जनक Air है Force retired colonel, डॉक्टर who is कर्नल really the Yoda of military battlefield auricular acupuncture, came up with the idea of putting needles in a sequence to help control pain. So we place very tiny needles, but very powerful needles onto the surface of the ear. These are called ASP. They're made out of gold. They're barbed so they stay in place. They provide excellent pain relief. About 80% of the people who get battlefield auricular therapy will get some type of pain relief out of it. I've seen very dramatic drops from 9, 10 to 0. I've seen minimal drops from 7, 8 to 6, 5. But some individuals have also come back and said they get secondary effects from having this done. Stress relief, help with sleep. ये जो चार्ट दिखाया गया था, आप लोगों को ऐसा ही चार्ट पेशेंट से मेंटेन करने हैं। जब पेशेंट आएगा तो उस समय हम लोग एक पेन का चार्ट होता है वो मेंटेन करते हैं और ज्यादा करके 80% रिलीफ इस 5 के पहले पॉइंट में ही मिल जाता है। तो आपको ये दिमाग में बैठा रहना है कि आज तक रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब नहीं है कि पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता। आधे से ज्यादा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले पेशेंट से सेम डे पूछने में घबराते हैं, उनको लगता है कि नहीं। अगर रोगी सवाल भी करता है तो हम कहते हैं अभी तो आप आए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बोलकर टालने की चेष्टा करते हैं। जबकि मेरे बताए हुए सारे तरीके में आपको रोगी को फर्स्ट डे उसी 5 मिनट के अंदर पूछना है आपको रिलीफ और रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। पेशेंट को मिलना जरूरी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रोगी का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। ये नींद अच्छा लाता है, इसका मतलब आपको भी सिखाया जा चुका है कि सबसे पहले रोगी के कॉन्स्टिपेशन पे और नींद पर सवाल होंगे आपके। तो आप लोग नोट करते रहिए कि कंसल्टेंसी के दौरान ये 2 बातें हम क्यों पूछते हैं। जब तक पेशेंट का नींद ठीक नहीं होगा, उसके दर्द में जल्दी आराम नहीं आएगा। दूसरा, जब तक उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा, तब तक उसके ची में बढ़ोतरी नहीं होगी और बेड ची से आप ची पर काम नहीं कर सकते। तो अब आपको 2 बातें समझ में आ गई है कि सारी बातें हर जगह गोल्डन रूल है। So there are secondary gain out of it, not just pain relief. The ancient Chinese, they used small microsystems, and the ear is a microsystem. They found out that there's actually a mapping representation of your entire body on the surface of the ear. It's called the homunculus. I call it the little man on your ear. And that particular mapping, if you place a needle, will allow your body to be treated. So if I have ankle pain, I can place a needle on the surface of the ear and help treat your ankle pain. It sounds amazing. It sounds ridiculous. I get it, but it works. The other theory is Noje. It's more modern and it's called frequencies, and I think it's a little bit more acceptable and easier to understand. So Noje thought that the 3 tissue types came together and fused in the ear. He called those frequencies. So the frequencies in the body, whether or not it's from the organs inside the body, the bones and muscles, or from the skin, gave out different frequencies. And he found that if he placed needles in certain parts of the ear, that he could treat that particular area of the body. We use it in the SOCOM enterprise because we were looking for non-medication options, and this is a non-medication option. It gives an immediate response within minutes. We'll know whether or not you'll respond to this because we'll see precipitous drops in your pain number. It's highly portable. I can carry 20, 30 very lightweight needles in my pocket. I can put them in my kit. I can have them on my person, and I can easily pull them out and provide the treatment within just a few minutes. इस थेरेपी का सबसे बड़ा लाभ ये है
कि वो वेल पैक्ड आते हैं, स्टरलाइज्ड आते हैं और अपने बटुए में, पर्स में, बैग में, पॉकेट में रखकर आप ट्रेवल कर सकते हैं और कहीं भी बड़े आराम से बिना किसी खास औजार के आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जो लोग होम विजिट करते हैं, उनके हाथ का यह सबसे बड़ा हथियार है और उनका फेथ गेन करने का भी हथियार है, क्योंकि होम विजिट्स 2 कंडीशन में होते हैं, या तो रोगी चल फिर नहीं सकता और आपके यहाँ आने में असमर्थ है और बहुत दिन से बीमार है, तो वहां तो आपको रिजल्ट ही दिखाने हैं, वो सारी जगह से तंग आ चुका है, या फिर वो बहुत ज्यादा अमीर है और वह रिजल्ट चाहता है कि आप उनके घर आके दें, इतनी भीड़ में वो जाना नहीं चाहता है। तो दोनों ही जगह में यह बढ़िया औजार है जो आप पॉकेट में रखिए और आराम से काम करिए। This is one of those things where there's not a clean explanation of why it works. We just know that it works because we've seen it in up to, again, 80% of the patients that come in. The report is 80% of the people will respond. The other thing is generally gives you pain relief for a few days, which is excellent. So keep them in, they'll fall out on their own, it'll give you pain relief. If you stack these treatments or you add other types of acupuncture, अब आपको यहाँ पर इनके भाषा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोला इन्होंने कि गिव रिलीफ फॉर फ्यू डेज। अब ये फ्यू डेज है, ये रिलीफ है, रिजल्ट इसी फ्यू डेज में आपको कन्वर्ट करना है। इसीलिए आर्थराइटिक के प्रोग्राम में हमने डिटेल से बताया है, फिजिकल एग्जामिनेशन से लेकर सारे वो डिसीज और होम केयर का इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये रिलीफ जो है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको सारी चीजें एक साथ जोड़कर काम करने की आदत or डालनी other है। modalities that the physical therapists have or the doctors have, it will give you synergized pain treatment, so actually more effective pain treatment as well. You're gonna feel really good. You're gonna feel so good at times that you're gonna wanna go out and do too much. And then the next day, you're gonna feel worse because you went out and did too much. So you just wanna lay low after you get the treatment. Hydrate, don't be excessive. It doesn't make your anatomic problem go away. It just helps cover the pain. Just remember that. So functionally, you can get in and actually be seen by the therapist sooner. इनमें फिजिकल थेरेपिस्ट का मतलब हो गया आपको सारे फिजिकल एक्सरसाइज हम बता चुके हैं, ट्रेनिंग पे कैसे करना है और फिजियोथेरेपिकल वे में कैसे करना है, तो उसका साथ में इंट्रोडक्शन करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। You got to have pain. If you don't have pain, we're not going to use it. So you have to have pain, acute or chronic याद pain. रखिएगा, Doesn't यह matter. सिर्फ दर्द के You have इलाज to में ही be काम आएगा, willing बाकी to कोई be भी treated, बीमारी में ये काम नहीं आएगा। and you can't be afraid of needles. Who shouldn't get it? If you're pregnant, you can't get सारे it. वैसे के वैसे Not हैं that जैसे it'll थी। have an effect on the baby, but it's just very conservative, and no one will treat you if you're pregnant. If you don't have any pain, we're not going to treat you. If you don't like needles or you pass out when you see needles, we're not going to treat you. If there's an active infection anywhere near the site, we can place needles on the other side of your ear, but we're not going to place needles on that side. And if you have an active infection on either ear, we're not going to treat you, okay? The other aspect is if you are subject to large keloid formation, that is not a contraindication, meaning that we will still treat you, but you have to be aware that you would develop keloids, and probably the most conservative thing is we're not going to treat you. And then if you have any type of bleeding disorder, that's relative because it's only on the surface of the ear, but probably we're not going to treat you. जो लोग ब्लड थिनर Traditional Chinese licensed acupuncturists exist in your cities, in your towns. You just would have to look them up, find out one that's registered. If you need to go outside
Joint Base Andrews is home to the Air Force Acupuncture Center, where patient care takes an alternative approach to healing. Since 2002, now retired Colonel Richard Niemso leads the program and has been treating his patients with acupuncture and developing battlefield acupuncture techniques for use throughout the United States military. As an acupuncturist using classical acupuncture, इसको हम namped out technique of auricular procedures to reduce the pain. And the whole idea with the battlefield acupuncture was to find a rapid technique that would be simple to use for all types of pain. Dr. Niemso currently leads the education of medical professionals from all branches of the military in the field of battlefield acupuncture. In the near future, techniques that are developed at the Acupuncture Center on Joint Base Andrews may be the first line of care on battlefields and in hospitals around the world. After that one, I did feel some results in the lower back area. Reporting for Joint Base Andrews, I'm Airman First Class Daniel Burkhardt. पूरी दुनिया के मेडिकल डॉक्टर्स अब इस कोर्स को कर रहे हैं जो सिर्फ आर्मी से रिलेटेड है. For darker uses in the past, but these examples are just the tip of a deeper history. It's hard to imagine that this needle right here, which is synonymous with pain, actually has healing properties as well. Acupuncture has been in use for over 3,000 years, and the military continues to practice some of those time-honored traditions. I found that I made many of my patients cry by using this technique, and it was not crying for bad reasons, but crying because it's the first time they had been pain-free in sometimes a decade. Battlefield acupuncture gives medics an alternative treatment during a combat situation. In a battlefield sense, like if you're out there and you're injured, and if you could just do this really quickly, and they instead of using something that's more invasive and cause them to be not able to get themselves out of the situation, I think it's a lot better. It's quick too and easy. You could just throw them in your pocket and not have to worry about anything. When you see someone walking around with tiny gold studs in their ears, don't judge their fashion sense. Does it look pretty? Yeah. Specialist Simon McTizik, Gyeongsang, Korea. It didn't hurt as much as I thought it was going to hurt. My name is Captain Davis, and this is Sergeant Hall, and we're going to explain and demonstrate battlefield acupuncture, or BFA. BFA is an alternative homeopathic treatment option utilized to treat pain, headaches, sleep disturbances, and anxiety. And it requires utilizing small little needles that are placed in the ear, 5 specific spots in each ear, so up to 10 total. And they are semi-permanent, so they last anywhere from 3 to 4 days, and they typically naturally fall out on their own. The way that people respond to BFA is very individual and unique to each person. However, most people report that they feel relief from their pain or symptoms in a matter of a couple minutes, almost immediately. And then over the course of the next couple days, they continue to feel relief, whenever they are seeing us for. This treatment option is available to active duty, retirees, veterans, beneficiaries, and we have a walk-in clinic every Wednesday at the Occupational Therapy Department at IAC from 11 to noon. And you can come in, you don't need a referral, you can just walk in and we'll get you treated. If you're really concerned about needles, you can always come in and talk to us, take a look at it and see if this is something you're willing to do. If you're really hyper nervous and scared about it, maybe this is not the best option for you. However, we will take the time that you need to be able to go through with the treatment if this is something that you're interested in doing. Okay, so today we're going to demonstrate how we're going to place these needles. Sergeant Hall is going to allow us to perform BFA treatment on him. We're going to use a little needle that's placed in here, and we'll stick it inside his ear. Okay, all right. Is it similar to an ear piercing? I would say milder than that, but yes, a lot of times people compare it to an ear piercing. मैं इस वीडियो को वापस चालू करने की चेष्टा करूंगा.
Needles are used to draw blood, inject medicine, or for darker uses in the past. But these examples are just the tip of a deeper history. It's hard to imagine that this needle right here, which is synonymous with pain, actually has healing properties as well. Acupuncture has been in use for over 3,000. सेम इफेक्ट ओके मैं थोड़ा सा अलग सिस्टम में लेने की चेष्टा करता हूँ. My name is Captain Davis, and this is Sergeant Hall, and we're going to explain and demonstrate battlefield acupuncture, or BFA. BFA is an alternative homeopathic treatment option utilized to treat pain, headaches, sleep disturbances, and anxiety. And it requires utilizing small little needles that are placed in the ear, 5 specific spots in each ear, so up to 10 total. And they are semi-permanent, so they last anywhere from 3 to 4 days, and they typically naturally fall out on their own. The way that people respond to BFA is very individual and unique to each person. However, most people report that they feel relief from their pain or symptoms in a matter of a couple minutes, almost immediately. And then over the course of the next couple days, they continue to feel relief, whenever they are seeing us for. This treatment option is available to active duty, retirees, veterans, beneficiaries, and we have a walk-in clinic every Wednesday at the Occupational Therapy Department at IAC from 11 to noon. And you can come in, you don't need a referral, you can just walk in and we'll get you treated. If you're really concerned about needles, you can always come in and talk to us, take a look at it and see if this is something you're willing to do. If you're really hyper nervous and scared about it, maybe this is not the best option for you. However, we will take the time that you need to be able to go through with the treatment if this is something that you're interested in doing. Okay, so today we're going to demonstrate how we're going to place these needles. Sergeant Hall is going to allow us to perform BFA treatment on him. We're going to use a little needle that's placed in here, and we'll stick it inside his ear. Okay, all right. Is it similar to an ear piercing? I would say milder than that, but yes, a lot of times people compare it to an ear piercing. So at this point in time, we've placed 4 needles. Oftentimes we do up to 10, but if someone's feeling a lot of relief already, we'll probably stop at that point in time. Sergeant Hall, tell us how that feels. Feels pretty good. For me, it's always a little uncomfortable, but I always start to feel a little warm and start to feel better, to be honest with you. It always helps with my anxiety a little bit, so. कुछ लोग डॉक्टर होने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, कोर्स नहीं करके आते हैं, किसी वेल ट्रेंड गुरु से नहीं सीखते, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने वीडियो को यूट्यूब से और बाकी चीजों से बहुत पॉपुलर कर देते हैं और लोगों को लगता है यही स्टाइल है, और होता क्या, फिर वो एक नकल की परंपरा आरंभ हो जाती है और कोई चीज कैसे निकलकर वो और कुछ बन जाती है। फिर मैं आपको एक दिखाता हूँ, वेल ट्रेंड डॉक्टर भी क्या गलती करते हैं। गलती अब आपको पकड़नी है और मुझे बताना है कि इसमें क्या गलती है, क्योंकि इसका बेस मैं क्लियर कर चुका हूँ और सामने वाले वीडियो में ये बातें थी। जूम में वीडियो दिखाना वाकई में एक समस्या की बात है। Acupuncture, and this technique is actually used for generalized pain management, and it's also really effective with headaches. So if you're someone who would like to have a more natural way to manage your headaches other than doing over-the-counter drugs or pharmaceutical medications, this is a great technique to give a try. And today we have Amanda here, and I'm going to be showing the protocol. There's a couple ear needles that we're going to be doing. It's a total of 5. It can be up to 5. Some people only need 3, some people need 2, some people need the full 5. What these needles actually do is they relax the body and the nervous system, and they also decrease the amount of pain that you're feeling, so it's very effective. The needles that we use are slightly different than the ones that in आप लोगों को याद रखते हैं कि इन्होंने क्या-क्या AST मिस्टेक्स needles, किए हैं। and that stands for पूरे वीडियो के basically like प्रोग्राम समाप्त acupuncture होने के बाद मैं semi-permanent, क्वेश्चन because आंसर these राउंड needles में will ये stay पूछूंगा in आप लोगों for से। about 2 to 3 days. You can take them out beforehand if you'd like, or you can come back
in and the acupuncturist can take them out for you. They are very, very small. They're in this little plunger here. They look almost like a little earring, and they're made of 24 karat gold. So we're going to start down here, this first point, which is the singular gyrus. A little pinprick there. And the second one that we do is the thalamus point. And so different people have different morphology on the ear. So the areas of the acupuncture points are more of zones. So it's about the size of an eraser tip. So sometimes people will have them a little bit more on the ridge, and sometimes they'll be a little bit below the ridge. You're kind of looking for more of a tender area when using these. And this one's a little bit tougher to get, so you let me know. Is that okay? Mm-hmm. Good? Okay. And the last one, my favorite here, is the Shenmen point. There we go. All right, so we have 5 little points here, which you can see. This is a singular gyrus, the thalamus point. We have the omega 2 point, 0.0, and Shenmen. And you can see she's getting a little bit of redness around the ear, which shows that there's blood flow going to this area. And the combination of these points, they actually stimulate your vagus nerve, which is the longest nerve in your body. And so by her getting up and walking around, it'll actually stimulate the needles more. And also heat also helps to activate those. So if you're at home and you can add like a little hot compress to the ear or do a little blow dryer to re-stimulate the points if needed. And you can shower with these in. You can do pretty much all of your daily activities. If they do start to irritate you, you can definitely take them out. And the easiest way to take them out is just by pulling the ear taut a little bit around where the needle is, and then just rotating it left and right, and then pulling straight out. And you can use tweezers if it's a little bit easier. And make sure to wash your hands. बताइए क्या गलती की, कितनी गलती की, चलिए क्या गलती की नहीं, कितनी गलतियां की, मेरे को कितनी गलतियां की बताइए, क्या बाद में पूछूंगा। दशांक मार्क खोलने दो इनको, कितनी गलतियां की ये बताइए। सर मेरे हिसाब से 3 है सर। ओके, मैं 3 बाद में पूछूंगा। और कोई? सर 3 3 मिस्टेक्स, 3 to 4। 3 to 4, ठीक है। बताना पड़ेगा वो 3-4 गलतियां कौन सी हैं? जी सर। ठीक। और आप लोगों को मैंने एक वर्क भी दिया था मेंटर ग्रुप में और मोक्सा वाले ग्रुप में भी, एक वीडियो देते हुए कि इसमें 15 गलतियां हैं। नहीं हुआ ना, लोकेशन फाइंड नहीं किया। मैंने पूछा नहीं नीलम जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक वीडियो दिया गया था आप लोगों को कि उसमें 15 गलतियां हैं और क्लास में वो बताना है। और अभी तक नीलम जी आवाज बंद कीजिए अपनी। मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि वो सारे लोग जब तैयार हो जाएं तो क्लास में डिस्कस करेंगे। लोगों ने वो वीडियो ही नहीं देखा ढंग से। प्रॉब्लम ये है कि खुद के लिए भी वक्त नहीं है लोगों के पास, तो आप रोगी को क्या वक्त देंगे? देखा है तो फिर क्लास में एक बार भी क्यों नहीं बोला कि सर उस वीडियो पे हम डिस्कस करना चाहते हैं? एक घंटे के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और उसमें वो भी तो एक क्वेश्चन था जिस पर डिस्कस होना चाहिए था, और उसमें गलतियां 15 नहीं थी, उसमें 40 गलतियां थी। मैंने तो 15 ही पूछे हैं आपसे। इसलिए मैं बोलता हूं कि परफेक्ट बनने में अभी साल भर लगेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतनी इजाजत दे रहा हूं कि रोगी को देखना शुरू कर दीजिए, रोगी से सीखिए, बराबर। तो वो नेक्स्ट क्लास में वो सारे लोग देख के आएंगे, क्योंकि अगले क्लास में हम वो पूछेंगे आपसे कि क्या गलतियां, क्योंकि गलतियों को रिमूव की बिना अच्छे थेरेपिस्ट नहीं बन पाएंगे। पूरा भारत गलतियों की भरमार हो गया, मतलब ज्वालामुखी बन चुका। मैं आपको बताता हूँ, अब तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत लाइन में आ गया हूँ और मुझे लाइन छोड़ के बहुत जल्दी संन्यास ले लेना चाहिए। तो इतनी गलतियां किसी भी थेरेपिस्ट, होम्योपैथी वाला इतनी गलती नहीं करते, आयुर्वेद वाली इतनी गलतियां नहीं करते, योगा वाले इतनी गलती नहीं करते, जितनी जम के गलतियां एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वाले करते हैं। वो हर चीज का धज्जियां उड़ाते हैं, गलतियां नहीं करते, वो हर चीजों की धज्जियां उड़ाते हैं। और उसके बाद भी कहते हैं कि हम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको तो ये आता है। ये 2 कॉमन वर्ड बड़े सुनने को मिलते हैं, ये तो हमको आता है, हम रोज कर रहे हैं। सर पेशेंट पे जम के रिजल्ट दे रहे हैं, पेशेंट हमारे सारे दौड़ रहे हैं, सब ठीक हो गए, बराबर। तो आपका काम से मालूम पड़ जाता है ना आप 10 साल तक क्या कर रहे थे। परफेक्ट बनिए,
वरना आईना जो है ना वही आपको बता देगा आप कितने परफेक्ट हैं। आंख से आंख मिलाइए आईने में जाके और खुद से सवाल कीजिए कि जितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या खोया और क्या पाया और 6 महीने बाद क्या पाने जा रहे हैं। हम पेशेंट से पूछते तक नहीं है कि हम उसको वाकई में रिजल्ट दिए नहीं दिए। पेशेंट अगर आना बंद कर देंगे तो हम फोन करके भी नहीं पूछेंगे आपने आना बंद क्यों किया। हम सोचते हैं पिंड छूटा, पैसे तो दे दिए। हम खाली अपनी वो सफलता गाते हैं जो 10% होती है। 90% की तो हम चर्चा ही नहीं करते कि हमसे वो 90% गलतियां क्यों हुई। हम सारा फोकस करते हैं उन 10% पे। एक आदमी ने हाथ उठा दिया, ये देखो मैंने इसको ठीक कर दिया। होम्योपैथी वाले ये बात नहीं बोलते, आयुर्वेद वाले ये बात नहीं बोलते, योगा वाले ये बात नहीं बोलते, एलोपैथी वाले ये बात नहीं बोलते, सर्जन नहीं बोलते। खाली एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वाले को ये जबरदस्त बीमारी है कि मैंने भला कर दिया उसको, मैंने एक सिटिंग में उसको ठीक कर दिया, मैंने 2 सिटिंग में कर दिया। और एक वर्ड साथ में जरूर बोलेंगे, सारा एलोपैथी ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरे पास आया, यानी सारे एलोपैथी डॉक्टर बेकार है, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक वर्ड सबके मुंह पे मिलता है कि एलोपैथी में 5 दिन तक इलाज कराया, एलोपैथी में 10 साल तक इलाज कराया, एलोपैथी से फायदा नहीं हुआ। अरे क्या मजाक कर रहे हो आप? पहले उनके बराबर पढ़ तो लो, आप उतनी मेहनत तो कर लो। उस सिस्टम में रिजल्ट नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हर सिस्टम का एक आपको भी बहुत सारी चीजों के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो चीजों को परफेक्ट कीजिए, खुद को थेरेपिस्ट के रूप में विकसित कीजिए। मेरा पीछे बोलने का मकसद यह है कि जीना सीख लीजिए कि आप थेरेपिस्ट हैं, उसको जीना सीखिए, ठीक है? एक बड़ा फेमस है इसके फायर, काफी चर्चा हुई थी दुनिया में। As we push medical innovation and capability to the leading edge of the battlefield, where we can save their life. But we've got some guys that have some horrific injuries, and they're getting narcotics for a longer period of time. They certainly are at risk to develop dependency, and that's what we're trying to avoid. The Army Surgeon General directed that we establish the Pain Management Task Force to take a look at alternatives to narcotics. Very large randomized trials. ये जर्मन का दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अमेरिका से अभी बहुत सारे कंट्री के एयरबेस पर पहुंच है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पहुंचे, इसका लेवल मालूम होना चाहिए। Of wounded soldiers into Walter Reed and other medical centers in the United States. The question was, can we relieve their pain and reduce the amount of medications that they're on, so by the time they get back, they're not snowed under on multiple medications. Guten Abend, welcome to Germany, and welcome home. I know you're heading home and you're excited. What at first seems like strange bedfellows, healing-oriented mind-body practices and sort of the hardcore military, actually is an opportunity that they jumped at because of the pragmatic need and nature that the wars have driven them to respond to. It wears on your lower back, wearing, a 40-pound vest, and it's got to the point where the pain's radiating from my back down to my hips and then down into my thighs. That's it. That's my nightly routine. First one's going in. I feel like I'm warming up a little bit. Pretty impressive. Especially for it to react that quickly. So right there. Okay. And bend down. That's pretty good. Any pain? Not when I'm doing that. Normally you would? Oh, yes. I haven't touched my toes in Well, it months. means we're getting the needles in the right place. I haven't even got near my toes in months, unless I do this, Hi. How are you feeling? I have pain, but it's sort of an annoyance than it is pain. Sore. I've jumping narcotics. Oh, you would? Oh, yeah. So you haven't taken it? No. Good. 15
15 years ago, we did a consensus conference at the National Institutes of Health, and we asked the question, do we have good evidence to show that acupuncture is safe and effective for any condition? They said, absolutely, it's been demonstrated that acupuncture is safe and effective, especially with post-operative and injury pain. 15 years later, you can't walk into your average hospital today and get acupuncture after an operation. The problem is not that it doesn't work. The problem is that we haven't figured out how to get it into the system so that we can make it widely available to the population. ये CNN न्यूज़ चैनल ने ये प्रोग्राम पूरा बनाया था, जिसके बाद काफ़ी और भी ब्रांच जो एलोपैथी के पेन मैनेजमेंट के उसमें फिर इसका विस्तार हुआ। Welcome back. Managing pain and other ailments does not always require a pill bottle. Acupuncture in the military has not only tailored a procedure that's seeing results downrange, he's now training hundreds of other doctors across the services. Petty Officer Michael Wilkin has more. I might be nervous once I feel the first one, and if it hurts, then maybe I'll be nervous after that. Staff Sergeant Candace Helder has never tried anything like this before. I've had a sinus infection for a little bit now, and I've been dizzy for about a month now. But she is willing to try acupuncture in order to get यहाँ back पर in मैं the आपको air. दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको एक जानकारी मिलेगी कि बिना नीडल भी आप इलाज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े सस्ते इंस्ट्रूमेंट जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, पल्सर मशीन होती है, उससे आप इलाज कर सकते हैं। जिनको थोड़ा सा महंगा खरीदना है वो ऐसा खरीद सकते हैं, वरना आप 600-700 रुपए के इंस्ट्रूमेंट से भी रिजल्ट दे सकते हैं। मकसद रिजल्ट देना है और बड़े आराम से दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें हम आगे चलकर सिखाएंगे, विथ एक्यूपंक्चर मॉडलिटीज से भी और विथ एक्यूप्रेशर मॉडलिटीज से भी, रिजल्ट दोनों में। Acupuncture, Colonel Susan Foy's pain was so severe, she couldn't do required physical therapy. It really got rid of the pain to where I was then able to do the strengthening exercises and stretches and things that I needed to do to prevent it from coming back. A lot of pilots do not want to be on medicines. They don't want to be grounded for a long period of time. They want to be able to get something done and be done with it and get back to flying. And so we can institute the battlefield acupuncture, and although they will be grounded for as long as those little needles are in the ear, which is usually 2 to 5 days, they will quite frequently get immediate results and not have to take medications. Sometimes we cover people from having medical evaluation boards, being kicked out of the military, because they've been through every other kind of treatment for the disorder, and then the military has no choice really except to board them out. But yet we can give them one more chance. We come here, we can try some treatments, and if we can recover them and resolve their situation, then they're good to go. The most common type of acupuncture practiced here at Malcolm Grow Medical Clinic is battlefield acupuncture. That's been used in both Iraq and Afghanistan. I wanted something that was faster, okay, that would be very simple to use. It was जितने भी developed by अमेरिकी retired सैनिक Force Colonel अफगानिस्तान में और इराक में थे, उन लोगों के decades, यहाँ पर इसकी क्लिनिक moniker स्पेसिफिक the बनाई गई थी father of कि acupuncture. चोट वगैरह ये सारे होते रहते थे, और वहाँ की सफलता अभूतपूर्व देखते हुए उसके बाद पूरी दुनिया के सारे जितने भी बेस है, नेवी के, आर्मी के, मिलिट्री के, उन सारे में इनके क्लिनिक शुरू हुए। अब सारे क्लिनिक जमकर चल रहे हैं। अब बहुत सारे पब्लिकेशन भी आ गए, मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट भी आ गई है। Ears, allowing for ease of movement and for patients to wear them until they fall out on their own for up to 5 days. How's that? Are you okay? Yeah, fine. The needles are also much smaller than those used in traditional acupuncture. It just feels like a piercing. एक्यूपंक्चर नीडल की तुलना में ये मोटा नहीं, बहुत ज्यादा मोटा होता है, तो इसलिए आप लोगों को उस नीडल के अलावा बाकी सारी चीजें हम बताएंगे। उस नीडल प्रैक्टिस मुझे एक एक हाथ को पूरे कान के एनाटॉमी बताते हुए ही आपको सिखाना है, सामने सामने। तो तब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, अगर कर लिए तो आप आफत में आएंगे, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं जो चीज सिखा रहा हूँ बस उसी के प्रति मेरा दायित्व है। तो मैं आपको ये निडल छोड़ के बाकी सारी चीजें सिखाऊंगा। ये निडल सिर्फ क्लास में आमने और सामने ही सिखाऊंगा। Doctors are quick to note, while it may provide up to 100% relief in patients, acupuncture is not a substitute and is used in conjunction with traditional medicine. I would frequently do the battle. प्राय हम लोग ये कहते हैं
कि विकल्प के रूप में, जबकि ये थेरेपी ने यह साबित किया ये विकल्प के रूप में नहीं है बल्कि पहले रूप में है। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि विकल्प के रूप में टीसीएम एक्यूपंक्चर भले ही हो सकता है, लेकिन जब हम बेटर फील्ड की बात करेंगे तो ये इंस्टेंट रिजल्ट नापने का और इंस्टेंट रिजल्ट देने का पेन में बहुत बढ़िया तरीका है। But still give them, for example, some Motrin to take with them in case the pain came back. So instead of all these, Staff Sergeant Helder is walking out without medication and at least one symptom already cleared. I don't feel the earache as much. You don't feel the earache as much? No. Fantastic. Great. We'll come on. Petty Officer Michael Wilkin, TPC News. The next round of training will बस ये मैं आपको एक अंतिम वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद जो Your मैं help, स्लाइड an दिखाऊंगा। alternative treatment for veterans dealing ये with debilitating थोड़ा सा मैं The आपके Department न्यूज़ of के क्लिप में Veterans दिखाता हूँ। Affairs is increasingly embracing non-traditional methods. News 8's medical reporter Jocelyn Memento with more on what veterans at the VA hospital in West Haven are now being offered. Jocelyn. And Darren, I'm talking about acupuncture, but veterans at the VA hospital not getting the traditional way acupuncturists provide treatment. This one has a twist to it. It's battlefield acupuncture. It's Thursday, the only ये day मैं of the week आपको this खास clinic तौर is पे open दिखा रहा हूँ for military. क्योंकि जो मेरे आर्थराइटिक का ग्रुप है, दिसंबर के बाद वो सब लोग अपने सेल्फ क्लिनिक को स्टार्ट करने में सफल होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। उनको मार्केट क्या है वह जानने के लिए दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग सेवा भाव से कर रहे हैं और कुछ लोग मेवा भाव से कर रहे हैं। तो सेवा और मेवा दोनों के बारे में मैं जानकारी दूंगा, जो आदमी जैसा जानकारी चाहेगा वैसा दूंगा। अब अमेरिका में उन लोगों ने वेटरन यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये क्लिनिक एक दिन के लिए ओपन किया है, क्योंकि वहां पर सारे इंश्योरेंस कवर होते हैं और मनी की बात होती है, तो ये उनको निःशुल्क सुविधा दे रही है। तो मैं आपको कहूंगा कि आगे चलकर जब मैं आपको क्लिनिक कैसे चलाना है तो वहां पर आप मुझसे जरूर पूछिएगा कि बुजुर्ग लोगों का सेवा केंद्र कैसे स्थापित करना है। ये बहुत बड़ा मार्केट है भारत का, इस मार्केट को हाथ से जाने मत दीजिएगा। यह मार्केट अगर आपने सिर्फ बुजुर्ग सेवा केंद्र ही अगर ढंग से स्थापित कर लिया, आपके यहाँ पर लाइन कभी समाप्त नहीं होने वाली है, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जैसे आपको सब्जेक्ट वाइज चलना है, आपको एक्यूपंक्चर वाइज, एक्यूप्रेशर वाइज, फिजियोथेरेपी वाइज काम करने के बजाय अगर आप सब्जेक्ट वाइज और अपने क्लाइंट वाइज चलेंगे तो आपकी सफलता लोगों की तुलना में 3000% ज्यादा होगी, 300 नहीं। तो आप लोगों को बुजुर्ग सेवा केंद्र कैसे चलाना है उसकी जानकारी आर्थराइटिक वाले ग्रुप को मैं दूंगा, और वो क्लिनिक आपको कैसे स्थापित करना है, वहां पर आपके क्लाइंट क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होता है, वहां पर आपको प्रॉफिट कैसे लेना है, समाज सेवा कैसे करना है, क्लाइंट कहाँ से लाना है, कैसे कैंप आयोजित करना है, पेशेंट को टर्नओवर अपने क्लिनिक में कैसे करना है, उनका प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बिना पैसे लिए। Veteran is looking to manage their pain. What's your pain level right now? Now it's about an 8. This is the Battlefield Acupuncture Group Clinic for chronic pain at the VA Medical Center in West Haven, developed by an Air Force flight surgeon, explains Dr. Daniel Fetterman. Who was trying to employ a new technique to get soldiers either who with minor maladies to be able to go into the field, or people who are wounded. Now those out of uniform are also benefiting. Instead of the traditional technique of thin needles inserted into areas of the body, tiny ones are pressed into 5 specific locations of the ear. Eventually, they fall out on their own. The theory is that there's some connection between the ear, those parts of the ear, and the parts of the brain that experience pain. So it's really just to get the blood flowing. So it doesn't really cure anything, but it decreases the activation of the painful centers. Internal studies show it's effective for short-term relief. We found that 88% of people will have a decrease in their pain score immediately after completion of the first treatment. For Marine veteran Rick Bakies, I can feel about the third set. Between the third and fourth set, I can feel actually relief. It just takes the pain and drops it. the standard acupuncture and medication didn't work for his knee pain. You got to try, keep trying until you find something that works. And to use something without medication is the big thing. It's back and joint pain for Air Force veteran Albert Ottaviano.
as I was getting the needles, I was talking to him, and I was saying it's gotten down to about a 2. He comes in every 2 weeks. I can get back to exercising to bring that strength back to those muscles. What matters most to both men, that more veterans take advantage of this novel approach. A clinical health psychologist and a clinical dietitian are also part of the acupuncture team. For more information about battlefield acupuncture at the VA in West Haven, download the free News 8 app or लास्ट में आपने सुना कि न्यूट्रिशन इसका एक पार्ट होता है। ये बातें मैं आपको बता चुका, सिखा चुका कि वो उस पर आपको काम करना है। तो इस वक्त हम चलेंगे आपके क्वेश्चन आंसर राउंड में। उसके बाद मैं स्लाइड के माध्यम से आपको कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा, और साथ में लेंगे उस वीडियो के बारे में जानकारी कि उसमें गलतियां क्या थी, क्योंकि बार-बार मेरा मकसद ये है कि आपका नजरिया, सोचने का तरीका, आपका देखने का तरीका बिल्कुल एक थेरेपिस्ट जैसा होना चाहिए। गलती कोई भी करे वो 1 सेकंड में समझ में आना चाहिए। तो अभी लेंगे पूर्ण विराम और सेशन जल्दी शुरू करते हैं, और उसमें लेते हैं क्वेश्चन आंसर, बाकी डिटेल और आगे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से यात्रा।